outside of your skin. And patients colonized bacterial hours, there's so much fungus there. If you take a spatula and scrape it off, you see a white coat of the spatula. So it's heavily, heavily growing as you will see in the video. And so this skin adhesion makes it really challenging to avoid skin-to-skin transmission in the clinic, because when the patient is colonized, when the hospital worker is colonized, touching the patient, then just skin-to-skin contact would be enough to transmit. And the real problem is, and this was just inside before, 90% of all clinical isolates are completely azole resistant. You cannot treat this fungus with azoles, particularly not with conazole or ketoconazole or osaconazole, whatever is out there, so they're really resistant. 30%, and antigermin B is an antifungal drug that's extremely toxic. And 2 to 8% echinocandins are being resisted, and that means that even these echinocandins that are first-line preemptive therapy cannot be used. Also, in some countries like here, echinocandin is extremely expensive. We're talking here in Europe, 800 to 1,000 euros per day for treatment. So this treatment is more costly than some anti-cancer treatment. So of course, we became interested in studying this, and so we have developed a native human skin model. So this is basically belly skin we get from the surgery department. And when you look here at this native skin, which is undamaged, you see that the fungus always grows. So the human skin has typically the skin damage, and they really grow like weed with there. They do not enter, they are unable to enter, but they grow crazy. And this is because they have enough nutrients and other goodies to live with. Only when you inflict wounding or wounds into the outer skin, for instance, when you scratch yourself heavily or when you have needles in the lab, by needling, you can see that Candida auris is able to penetrate to establish an epidermis and dermis. And then inside the human skin, they also start to change their morphology. And this morphology change is really fascinating. And this is sort of, let's say, it's not only Dr. J.J. who is the height, it's an very beautiful continuum of seeing. And finally cells are linked to this resistance, and finally lipids. Lipids are really at the core of drug resistance, because all of the ergosterol synthesis genes are involved in this resistance. So now if you were a student and starting with this project and find out which gene is actually really causing it, you would have to knock out all of these genes, make combination mutants, make double mutants, triple mutants, and then figure out what the phenotype is. So we decided to do something else. We decided to take a proteomics approach, and what we did, we took the same cells that are sensitive and resistant, so light brown and dark brown, and cultured them overnight. In addition, added antiparasitic, so you need a treatment as well. And then we put, make sure the protein extracts, put this into LC and SMS, and then we put all of the proteomics data and overlaid them with RNA-seq data. चौहान हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के पद पे हूँ नई दिल्ली में। सर, आपको जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी बताइए। हाँ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विदेशों से भी एक स्विट्जरलैंड के हमारे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट आए हैं, और दूसरे साइंटिस्ट भी आए हैं, प्रोफेसर हैं, वो एक ऑस्ट्रिया के हैं, एक स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रिया के भी आए हैं। और वास्तव में देखा जाए तो उदयपुर जैसी जगह के ऊपर इतने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समारोह करना एक बहुत चैलेंजिंग था, और जिसमें डॉक्टर
प्रोफेसर बामणिया साहब ने और जो दूसरे डाकल साहब हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया रात दिन, और देश विदेश न जाने कहाँ कहाँ से नाम आए, और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा देश विदेश में फैलेगी। और जो भी ये कार्यक्रम हुआ है, ये जो बच्चे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए सदुपयोगी होगा, क्योंकि रिसर्च पेपर आए हैं, आर्टिकल आए हैं, सुनना है। तो ये चेतना है, जागृति है, और इस जागृति के सहारे पहले पैदल चलते थे, अब विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में सभी बच्चों को लाभ होगा, चाहे देश के हों विदेश के हों। बहुत सारे प्रोफेसर दूसरे देशों के भी जुड़े हुए हैं, वो महिला प्रोफेसर भी और हैं। और सबसे अच्छी जो बात मुझे यहाँ आके लगी, सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है, हमारी बेटियों की है, जो इसमें प्रतिभागी बनी सुन रहे हैं, और देखिए कितने चीज़ें दिखा रहे हैं। खासकर जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, मैं किसी प्रोफेसर का अटेंड कर रहा हूँ कार्यक्रम, तो उसने जो डिजीज है, महामारी है, जैसे पेंडेमिक्स आया, कोरोना महामारी आई, कितने लोग मर गए, तो उसके ऊपर भी व्याख्यान हो रहा है। बहुत शानदार व्याख्यान है जो प्रोफेसर ऑस्ट्रिया के दे रहे हैं। बहुत अच्छा इनका, मैं कहूँगा कि प्रेजेंटेशन है, स्लाइड के सहारे कैसे बीमारी फैलती है, कैसे बचाव किया जाए, कैसा नहीं। तो ये इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, लोगों को चेताना चाहिए, जनता को चेताना चाहिए, ताकि जो महामारी पहले भी बहुत सारी आई, लेकिन कोरोना में आप जानते कितने लोग हमारे चले गए, सारे विश्व के अंदर तबाही हो सर गई। आपसे एक सवाल है, जैसे कि अभी एक और आ रहा है H1N2, ऐसे बारिश अभी आ रहा है, आने वाला है, उसके लिए तैयारी भी होगी। देखिए, ये जो इस तरह का सवाल है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा भूगोल है, ज्योग्राफी, मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैंने 52 कविताएं लिखी, और पेंडेमिक्स के ऊपर भी मैंने बहुत सारा शोध किया। इससे पहले भी महामारी आई है, आप देखिए 1914 से 18 के बीच में एक महामारी आई थी, जिसको लोकल भाषा में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में कार्तिकवाड़ी बोलते थे। तो वो क्या है, मुंबई के थ्रू आई थी। वर्ल्ड वार जारी था 1914 का, और वो जो वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे उनको भी नहीं बताया गया था महामारी, तो फिर मुंबई से फिर फैलती गई महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया फैली, और उसमें न जाने अनगिनत। और उसकी खासियत देखिए उस महामारी की, जो खेत में चले गए और जिन्होंने मिर्च खाया। Chemical and environmental sciences. These are the latest and upcoming areas in the science, and these are very much required. जो environmental pollution होता है, जो genetic disease होती हैं, जो chemicals समेत नए chemicals चाहिए होते हैं अलग अलग disease को treat करने के लिए और industry के लिए, उन सब के बारे में यहाँ बातचीत होती है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली हमारे जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर जितने भी लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे इनवाइटेड जो स्पीकर्स हैं वो बाहर की कंट्रीज से आए हैं। जैसे हमारे एक स्पीकर हैं जो ऑस्ट्रिया से आए हैं, एक हमारे स्पीकर स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, हमारे डिग्निटरी जो हैं डॉक्टर गुलशन वाधवा साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। हमारे दूसरे डिग्निटरी हमारे चीफ गेस्ट जो थे डॉक्टर GS चौहान साहब, वो UGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। तो ऐसे ही हमारे इस इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जितने भी स्पीकर्स हैं वो इंडिया के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो IIT हो जाए, एम्स हो जाए, DRDO हो जाए, BHU हो जाए, JNU हो जाए, ICGP हो जाए, NIPGR हो जाए, नाइपर हो जाए, RCB हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो जाए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो जाए, बायोफार्मा की कंपनीज हो जाए, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो जाए, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो जाए, हॉस्पिटल्स हो जाए, वहाँ सारे से सब जगह से हमारे स्पीकर्स आए। दुनिया के जाने माने सारे के सारे जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से हमने हमारे स्पीकर्स को इन्वाइट किए। हमारे इस पूरे इवेंट के अंदर 650 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशंस हुए हैं रजिस्टर्ड, और इंडिया के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ से जम्मू कटरा से सर हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस आए, चेन्नई से हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस हैं, हैदराबाद से हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस है, गुवाहाटी IIT गुवाहाटी से हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस हैं, फिशरीज इंस्टीट्यूट है सर मुंबई के अंदर, वहाँ से हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ दी इंडिया ऑल्सो। हमने इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे स्टेट्स को टच किया है। सिर्फ सर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि हम मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ से हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस नहीं है। अदरवाइज हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस हर अलग स्टेट्स के बेस्ट टू बेस्ट सेशंस इस इंटरनेशनल इवेंट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तरह की एडवांस प्रशिक्षण कह सकते हैं इसको। ये एडवांस, जितनी भी एडवांस रिसर्च हो रही है आज, उनको
जो रिसर्चर्स हैं उनको एक कैसे डेलिब्रेट की जाए, स्टूडेंट्स को कैसे बताई जाए कि आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी चल रही है, लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है, उसके बारे में हमने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। एक दिवसीय कार्यक्रम रहेगा आज का कार्यक्रम है और कल का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम के अंदर मेन हमारा इनॉग्रल फंक्शन था, जिसके चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर गुलशन वाधवा साहब थे और डॉक्टर GS चौहान साहब थे। और सेकेंड डे का जो इवेंट रहेगा वो हमारा जो इसके अंदर मेन जो इवेंट है वो हमारी अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसके अवार्ड सेरेमनी के अंदर हमारे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जिसके अंदर बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड है, वुमेन इन साइंस अवार्ड हैं और कुछ प्रोफेसर्स के भी अवार्ड्स हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो वी हैव अ नंबर ऑफ अवार्ड्स इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। ये स्टूडेंट आए हैं ये केमिस्ट से जुड़े हुए भी हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी सबसे इन्वॉल्व है। एनवायरमेंट चेंज और इस तरह के और एरियाज भी हैं। क्लाइमेट एक्शन प्लान जो भी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के साथ चल रहा है वो सब इसमें इन्वॉल्व है। The specialist literature, including the 1,475 pages in these two books. So they read this in order to understand the ethno-linguistic prehistory of the Indian subcontinent. And I'm going to try to tell you a whole bunch of it in just 25 minutes. So I'll be fast, but I'm going to skip quite a lot of things. But I can give you a lot to read. Beginning with that book by James Mlsu. This is a language family. It is the Indo-European language family to which Hindi belongs, German, French, Russian, English. And like in biology, a family tree or a tree is determined by the branching by nested innovations, shared innovations, mutations, and you can demonstrate, just as with a Y chromosomal phylogeny, single nucleotide polymorphisms, molecular mutations that are then shared in subsequent generations. That's what determines, and here with phonological sound laws and morphological innovations, we get the same thing for the Indo-European language family. So Proto-Indo-European splits into Anatolian and other Indo-European, which splits into Tocharian and Classic Indo-European, which splits into Italic Celtic, and Central Indo-European, which splits into Germanic, and Greco-Aryan or Nuclear Indo-European, which again splits into Greco-Phrygian and Satem languages. Satem splits into Thraco-Armenian and North Satem, and North Satem splits into Daco-Albanian and East Satem, which finally splits into Balto-Slavic and Indo-Iranian, Vedic, Sanskrit. So at the top of the tree we see the languages here in northern India. And this is a well-supported Indo-European, up-to-date Indo-European language family tree, state-of-the-art. What we know about this Indo-European, based on old texts, comparative historical linguistic evidence, the archaeology leads us to believe that the distribution was like this around 2300 BC, with, you see, the precursors of Indo-Aryan in Soviet, used to be Soviet. Then there was a south split, Indo-Aryan towards the south and Iranian towards the north. Then these moved into the Iranian plateau, and the first people to her are Indo-Aryan, who crossed the across the Indus and across the Persian plateau, all the way to the Jazira in the north of Mesopotamia, where we know that the Mitanni were an Indo-Aryan elite who conquered a Hurrian populace and became the aristocracy, the ruling class in the Mitanni kingdom. We know this from pharaonic Egyptian records and Egyptian libraries which have been unearthed, which describe this movement of